Yeah, good evening. Thank you. Once again, on behalf of Surya Roshni Ltd, I extend a warm welcome to everyone for joining us today. On this call, we were joined by Mr. Tarun Baldua, ED and CEO of Steel Operations, Mr. Jitendra Agrawal, CEO Lighting and Consumer Durable, our CFO and Company Secretary, Mr. Bharat Bhushan Singhal, and SJA, our Investor Relations Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial result press release and even investor presentation, which has been uploaded on the stock exchange as well as on our company website. The company registered a marginal revenue growth of about 2% during the quarter due to lower steel prices and economic headwinds. For the quarter, EBITDA and PAT grew by 65% and 166% respectively on year-on-year basis. This was largely driven by value-added products once again and better volume offtake and lower raw material prices. During the quarter, company focused on innovation of new age product premiumization, strengthening its reach with dealers and distributors, and expanding its market presence in the rural and semi-urban market through marketing and advertising campaigns. The company has been judicious, very careful in the budgeting and capital allocation, resulting in lean and very healthy balance sheet. We firmly believe that our growth will be sustainable with a comfortable working capital cycle and balance sheet position. The company also witnessed a healthy improvement in gross margin due to enhanced product mix. Over the past few years, company has placed its emphasis on reducing the debt. During the quarter also, the debt reduced by 171 crore and the debt to equity ratio stood at 0.12x. With this, the company intends to become debt-free by next financial year. Coming to lighting and consumer durable business, company registered a revenue growth of 11.5%, which was driven by favorable business environment for both B2B and B2C segments. Also, during the quarter, company executed various renowned projects which led to a growth of 27% in professional luminaire lighting with multiple upcoming government and private infrastructure capex. We are confident that our professional lighting division is poised to reap significant benefits from this cycle. This division has and will continue to build a strong order book in FY2024. EBITDA for the quarter stood at rupees 33 crore, registered a growth of about 52%, and EBITDA margin, which is very important, stood at 8.8%. And earlier, same year on year, it was about 6.48%. This improvement was supported by better product mix, backward integration, attributable to the PLI scheme and premiumization. With this, we expect our margins to improve further. With the anticipation of the upcoming festival season, the company has taken proactive steps to enhance its product offering in consumer durable segment by introducing a diverse area of items tailored to meet the preferences and needs of consumers. We strongly believe that this endeavors will not only augment to our market presence but also contribute significantly to enhancing our brand equity. The capex under the PLI scheme is ongoing as per the plan, which has benefited the company in lowering the cost due to backward integration nature of the capex. The company also reduced its replacement cost now at 4.17%, reflecting a significant reduction from 4.57%
last year on the same quarter. The company has been making sustainable investment to enhance its in-store excellence, in-store product display and in-house merchandising for customers. Concurrently, efforts has been directed towards strengthening interactions with dealer, distribution and electricians through a series of campaigns. In FY2024, company plan to double the advertisement spend cost from the current level, which will in turn help to build brand visibility and increase the market share. With this, the company plan to enhance the outreach program through various ATL and BTL campaigns. The company will also strengthen the semi-urban and urban distribution network, which is now one of the largest in the industry. Now moving to the steel pipe and steel business. Due to lower steel price throughout the quarter, the company top line remained almost flat. Nonetheless, we expect raw material costs to stabilize over the next couple of months. But the company increased its volume by 20% in the quarter, with domestic business increases by 27% and export business increasing by 7% in volume. And we expect the overall performance to accelerate towards H2 FY24 as a lot of infrastructure projects, whether it is private or a public, will pick up execution pace post-monsoon session. EBITDA was 83 crore during the quarter of steel business, showing a 70% increase and an EBITDA per ton of rupees 4,388 rupees per ton. Volume, premium product and a diversified product mix drive this performance. Company has witnessed a steady order inflow in API pipe and other value-added products from oil and gas, CGD, water transportation sector as well as export markets. With this, the order book is above 500 crore as of 30th June 2023. The board of directors has approved a capex of about 45 crore, mostly for the cold rolling modification and a small amount of about 5 crore for the PVC business. While capex for fly pipe at Anjar and GP, CR coil pipe in Hindupur is ongoing. With this capex plan in the coming years, the company anticipates this segment to achieve revenue growth of about 10 to 12%. Lastly, we remain confident about the opportunity that lie ahead of us. The company is focusing on geographical expansion, innovation, efficiency, enhancement, infrastructure and human capital to deliver the best class solution to our customers. And lastly, there is a small announcement of splitting of existing equity share to enhance the liquidity in the capital market, to widen the small shareholder base and to make the share more affordable to retail investors. The board has approved subdivision of one equity share of face value of rupees 10 each into two equity shares of face value of rupees 5 each. So now I will like to request our CFO, Mr. B.B. Singhal, to share his thoughts. Thank you, respected MD, sir, and a very good evening to all participants on the call. The company's revenue reported a sustained growth momentum during this quarter. Revenue stood at rupees 1,875 crore, a growth of 2% year-on-year basis. Per quarter, EBITDA and PAT grew by 65% and 166% respectively on year-on-year basis to rupees 116 crores and rupees 59 crore respectively. EBITDA margins improved by 235 basis points to 6.2%. In lighting and consumer durables, for this quarter the revenue stood at rupees 374 crore, a growth of 11.5% year-on-year basis.
EBITDA and PBT stood at rupees 33 crore and rupees 26 crore, a growth of 52% and 88% YoY respectively. This revenue growth can be attributed to the PLI scheme, backward integration, and the increased demand for value-added products. In the steel pipes and strips segment, during first half of financial year 24, the company's EBITDA and PBT grew by 70% and 237% to rupees 83 crores and rupees 55 crores respectively. EBITDA per metric ton stood at rupees 4,388 compared to rupees 3,103, a robust growth of 41% year-on-year basis. As of 30th June 23, the company has reduced debt by rupees 171 crores and continues to remain long-term debt-free. Debt equity reduced to 0.12 times as of 30th June 23. The company continued to maintain positive cash conversion cycle. The working capital days stood at 64 days during first quarter. Working capital days for lighting and consumer durables stood at 63 days in first quarter, while steel pipes and strips working capital days at 64 days in first quarter. As on 30th June 23, return of capital employed improved by 750 basis points from 8.2% to 15.8%, and return on equity ROE improved by 680 basis points from 5.7% to 12.5%. With this, I can conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, press star and 1 on your touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Once again, a reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Once again, a reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. The first question comes from the line of Shreyansh J. from Swan Investment. Please go ahead. Hello. So can you help me with the EBITDA per ton for the year as well? What is your guidance on that and the growth that we can expect in the steel business? थैंक यू. दो चीजें आपने पूछी. एक तो मैं एक बार फिर और रिमाइंड कराना चाहूँगा अपने सारे इन्वेस्टर्स को. ये जो बीच में जून में जो साइक्लोन आई थी वेस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको भुज प्लांट से एक्सपोर्ट में और बाकी एपीआई में उसका इम्पैक्ट काफी हद तक देखने को मिला. करीब 15 दिन तक प्लांट डिस्टर्ब रहा. तो प्राइस फॉल होने के अलावा वो एक बहुत बड़ा रीजन था. बट पूरे साल भर में मतलब रेवेन्यू टर्म्स में 10 से 12% की ग्रोथ स्टील डिवीजन में होगी. और जहां तक EBITDA पर टन का आपने बताया कि जैसा आपने देखा होगा Q1 के अंदर में करीब जो है 4400 रुपए के आसपास रहा, जो पिछले साल 3103 रुपया था. तो काफी इसमें 41% के आसपास का इम्प्रूवमेंट है. एनुअल बेसिस पे मैं ऐसा मानता हूँ, अभी प्रिडिक्ट करना स्टील एचआर कोयल में बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं इतना अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि पिछले साल हमने करीब 6500 रुपीज पर टन का EBITDA हमारा था. सो उसके आसपास हम लोग रहेंगे या उसको थोड़ा सरपास भी कर सकते हैं. यानी ओवरऑल 50 साल के इतिहास में लास्ट ईयर स्टील बिजनेस का पाइप का बहुत अच्छा था. तो उससे नीचे हम लोग नहीं रहेंगे इतना मतलब अभी मैं बता सकता हूँ. बट प्रिसाइजली एग्जैक्टली नंबर
कुछ भी कोट करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। थैंक यू सर। के अंदर में परसेंट EBITDA सब्सटेंशियली ऑन हायर साइड रहेगी। ओके सर, खाली ये समझना था QOQ अपन ने थोड़ा फॉल देखा है सर, 9,800 अपन ने Q4 में किया था EBITDA पर टन। तो ये स्टील प्राइसेस ऑब्वियसली हैव करेक्टेड, तो इसमें से वुड यू एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दैट के स्टील टू स्टील प्राइसेस होगी कि इतना मिक्स में भी कुछ है चेंज हुआ है सर? देखिए वो एक Q4 में अच्छा नंबर था, लेकिन वो एक क्वार्टर का था। ओवरऑल साल का 6500 रुपये, उसके आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर ही हम लोग रहेंगे, वो हमारी चेष्टा रहेगी। लेकिन दो तीन चीजें हैं Q4 के अंदर में, स्टील प्राइस हायर साइड पे थे, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैलेंस शीट में था। ऑल्दो हमारा API एक्सपोर्ट और बहुत सारे जो है फिक्स प्राइस के ऑर्डर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रूटीन में ट्रेड वगैरह जो करीब 65% 60% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल बिजनेस में, उसके अंदर में इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहता है। तो इस बार के क्वार्टर में भी हमने देखा करीब उसका 1000 रुपये पर टन का EBITDA का इम्पैक्ट स्टील में करेक्शन होने की वजह से था। अदरवाइज इट कुड हैव बीन 5,400 रुपीज पर टन EBITDA। तो वो एक दूसरा रीजन था। तीसरा मैंने आपको बताया साइक्लोन की वजह से करीब 10,000 टन क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट और API में नहीं कर पाए, जहाँ पे GP ग्रोस मार्जिन जो है करीब 10,000 रुपये के आसपास रहता है EBITDA पर टन। तो ये मुख्यतः 3 रीजन्स रहे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया Q1 से बेटर Q2 रहेगा, भले ही बारिश का मौसम हो उसके बावजूद भी, और ओवरऑल 6500 के आसपास हमारा एनुअल टारगेट है। धन्यवाद सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन सर ये FMEG बिजनेस पे है। अब कैसा है सर, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, और सब लोग यही बोल रहे हैं वी विल एक्सपैंड आवर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करेंगे। बट सर एक लिमिट होता है टू टू एक्सपैंड योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू गेट दैट ग्रोथ। तो आपके हिसाब से what will be the top 2-3 things that you will have to do to gain market share or to grow your business in that segment? एक तो आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे लोगों का यही मतलब कहना रहता है कि हम लोग ग्रो करेंगे, हम लोग अच्छे नंबर्स लेकर के आएंगे, ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करेंगे। पर सूर्य रोशनी को इस पोजीशन तक आने के लिए 50 साल लगे हैं, और देश भर में हिंदुस्तान में करीब 3.5 लाख के आसपास जो है इलेक्ट्रिकल आउटलेट हैं, और मतलब उस लेवल पे जाकर के अपनी पोजीशनिंग बनाना इतना इजी नहीं रहता है। ये जरूर है कि कोई भी कंपनी खुल करके 100 करोड़ से 300 करोड़ का बिजनेस तो कर सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। और आपको ब्रांड के साथ एक नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क के साथ आपको इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आपका प्लांट और ये सब भी आपको मतलब उसके लिए चाहिए होता है। तो मतलब हम लाइटिंग बिजनेस को करते हुए 35 साल हो गए हैं। आज करीब 1500-1600 करोड़ की टर्नओवर पे हम पहुंचे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जैसे लास्ट ईयर भी हमने डिफिकल्ट टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो Q1 के अंदर में 11.5% के आसपास का हमारा जो है ग्रोथ रहा है, और हम लोग करीब 20% के आसपास का ग्रोथ एनुअल बेसिस पे लाइटिंग बिजनेस में करेंगे। ठीक है। और सर खाली आखिरी सवाल, एनी प्लान्स फॉर डीमर्जर सर? अभी ये बिजनेस आपका सस्टेनेबली ग्रो हो रहा है? इस बोर्ड मीटिंग में तो डिस्कस नहीं हुआ। इस बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट के बारे में जरूर डिस्कशन हुआ, और बोर्ड ने अप्रूव किया है। लंबा डिस्कशन था कि 2 रुपये करे कि 5 रुपये करे, बट मैनेजमेंट का हमारा ये कहना था कि हमको हमारा शेयर एज कम्पेयर टू पीयर जिन्होंने 20,000 से कम किया या 3,000 में स्प्लिट किया, उसके कंपेरिजन में 825 के आसपास का भाव था, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारा ये कहना था कि हमको आगे भी ग्रोथ करना है, परफॉर्मेंस देना है। तो हमने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया, और जो 10 रुपए की फेसबुली थी वो 5 रुपए हुई। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए बैंक की जो लाइबिलिटी थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब 230 करोड़ वो भी वर्किंग कैपिटल लोन है,
मतलब लॉन्ग टर्म डेट तो हमारा 0 है। तो होपफुली जैसे एक क्वार्टर में 171 करोड़ रुपए रिड्यूस किया है, लेकिन आगे ग्रोथ भी आएगी। मैं ऐसा मानता हूँ ये हमारा पक्का मतलब इन्वेस्टर के साथ हमारा ये वादा है कि अगले साल का बैलेंस शीट जो है 0 डिट वाला बैलेंस शीट रहेगा। इंटरनल कैपेक्स के लिए भी हमको बैंक के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 50 साल कंपनी को हुए हैं, ये साल इन्वेस्टर्स के नाम पे साल रहेगा। मैं इतना आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ। बाकी आज के बोर्ड मीटिंग में जो आउटकम रहा वो आपके सामने हमने रखा, और ऐसी कभी भी कोई बात आएगी तो आपको हम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Avesh Chauhan from IDBI Capital. Please go ahead. सर हमारे स्टील पाइप डिवीजन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,500 से 8,000 का एबिटा रह सकता है, राइट, FY24 में? नहीं, क्या बोल रहे हैं? सर हाँ, पूरे साल का 6500 या उससे ऊपर रहेगा। ओके। और सर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ बाकी सब कमियां ये बिजनेस में स्टील पाइप्स में स्पेशली दे ग्रो नॉर्थ ऑफ 15%। हम क्यों ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि 10-12% से वॉल्यूम ग्रोथ हो? सिर्फ ऐसा है कि हम ऐसा मानते हैं कि देखिए 2 तरह के मार्केट है। एक मार्केट वो है मेहनत ज्यादा करो और मार्जिन कम रखो, हम उस पर विश्वास कम करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है जिसके लिए सूर्य ब्रांड जाना जाता है, वो उस पर हमारा फोकस रहता है। बाकी दूसरा हमारा काफी कैपेक्स का भी कंस्टेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा हर बोर्ड मीटिंग में एक एक चीज हम खोल के आपके साथ रख रहे हैं। तो आने वाले समय में मतलब वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि देखिए मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है जिसमें पर्टन ईबिटा 1500 आता है राउंड सेक्शन के अंदर में, जीआई और राउंड के ऊपर राउंड ब्लैक पाइप में 3,000 रुपये आता है, गैल्वेनाइज पाइप में 5,000 रुपये आता है, एपीआई एक्सपोर्ट में 9 से 10,000 रुपये आता है। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि थोड़ा प्रीमियम और जो सूर्य ब्रांड को शूट करे वो उस पर हमारा फोकस रहता है। और सिर्फ मेहनत करें और पैसा ना बने, मुझे लगता है वो बिजनेस तो फिर क्या करना। और ऐसा नहीं है कि ये जो सेक्शन पाइप के अंदर में जो है आप कोई ब्रांड इक्विटी आप बनाते हो। मैंने देखा है 500 रुपये सस्ता कर दो तो उसी का बिकने लग जाता है, क्योंकि एचआर कोल का सोर्स तो एक ही है। पर फिर भी आप देखेंगे ओवरऑल जो है 12% की ग्रोथ जो हमारा इंटरनल टारगेट है, वो एक मतलब रेवेन्यू टर्म्स में वो ग्रोथ लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आपको वॉल्यूम ग्रोथ 20% से ज्यादा करना पड़ेगा। जी सर। और लास्टली सर, जब भी बोर्ड में डी मर्जर को लेके कभी डिस्कशन हुआ, आपने अभी बताया कि इस बार तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ बट पहले हुआ था, तो क्या वजह थी कि वो डी मर्जर नहीं किया गया? पहले नहीं, एजेंडा में आया ही नहीं। पहले 2 बार डिस्कशन हुआ जब मैं एमडी था, मुझे याद है। तो बोर्ड में ये कहा गया कि आप जो है इसके लिए एक कमिटी बनाया जाए और वो कमिटी उस पर काम करे, और उस पर काफी हद तक भी काम हुआ था। बट वो इस बार के बोर्ड मीटिंग में नहीं आया, तो वो चीजें मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता। तो जब भी आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। तो सर हम ये कह रहे हैं कि कमेटी बन गई है जो ये इस पर वर्किंग कर रही है। कमेटी बनी हुई है और कमेटी में अपना काम भी पूरा कर लिया है। तो उसमें जो है मतलब लेकिन यही है कि ये सब चीजें मैं आपसे तभी शेयर कर सकता हूँ जब बोर्ड से कुछ हमको उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलता है। तो तब तक के लिए मैं इसमें ज्यादा बता ही नहीं सकता। जी सर, अप्रिशिएट। तो लास्टली हम लोग नेक्स्ट ईयर कह रहे कि हमारा डेट फ्री बैलेंस शीट हो जाएगा, तो हम क्या मतलब केपेक्स तो नहीं रहेगा ज्यादा आई थिंक, तो कैश का क्या करेंगे? वो सब ऐसा है, देखिए 2 चीजें होती है। जो भी कैश जनरेट होगा वो ग्रोथ में लगेगा, कंपनी के ग्रोथ में,
और फिर जो है वो हम डिविडेंड पे करेंगे। उसके अलावा भी बचता है, तो फिर कुल मिला के मैंने आपको कहा ना कि जो भी कैश जनरेट होगा वो तो या तो बिजनेस में रहेगा या इन्वेस्टर्स मतलब हमारे शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा, तीसरी जगह तो जा नहीं सकती। जी जी सर, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Rohit Mehra with SK Securities. Please go ahead. Thank you for the opportunity. So the first question is, what kind of growth are we seeing in the lighting business for financial year 24? मैंने बताया ना, जैसे करीब 20% हमारा लाइटिंग में रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगा और स्टील डिवीजन में करीब 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY24 में। And what products have we launched for festive and what kind of growth do we expect in second half? So see, launching of product is a regular process. In fact, lighting के अंदर में अभी हम करीब 400 डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अब्रॉड लेकर के गए थे। एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी हुआ। सो लाइटिंग बहुत कंटिन्यूस जो है इनोवेशन और प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट और उसकी मतलब क्या कहते हैं क्वालिटी में और उसके लुक एस्थेटिक के अंदर में बहुत इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो आपको वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट और एस्थेटिक में भी अच्छा दिखे, ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए हमने एक हमारा R&D सेटअप किया है नोएडा के अंदर में, करीब 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें हमने किया है, करीब 50 इंजीनियर डे एंड नाइट उसमें काम करते हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि महीने में कम से कम 5 नए प्रोडक्ट और साल भर में 60 से लेकर के 70 प्रोडक्ट हम लोग इनोवेट करते हैं, डेवलप करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। तो इससे रेगुलर ऑन गोइंग प्रोसेस, और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उसके अंदर में कुछ न कुछ R&D करके थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट हम मार्केट को डिस्प्ले करें। अभी एक जैसे मैंने आपको उस समय भी कहा था कि हम लोग जो है काफी बड़ा कैंपेन देश भर में ले रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग जो है आउटलेट और स्ट्रेंथन करने के लिए और टायर 1 और टायर 2 के बड़े शहरों के अंदर में अपनी पोजीशनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए, तो देश भर में हम लोग जो है करीब 200 रिटेल मीट और रिटेल आउटलेट्स के जो है सेमिनार्स करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी रहेंगे और हर एक बड़े शहर और या टायर 2 के बड़े शहरों के अंदर में जो इलेक्ट्रिशियन रहेंगे उनके साथ हम लोग जो है वर्कशॉप करेंगे। और उसकी वजह से भी हम सोच रहे हैं कि अगर बड़े टायर और टायर 20 सीसी के बड़े शहरों के अंदर में हमारी अगर पोजीशनिंग बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हमारा क्योंकि हम लोग ओरिजिनली बल्ब टीवी बेचते रहे, तो ये जो डाउन लाइटर और स्मार्ट लाइटिंग में कहीं न कहीं हम लोग, मैं कंपेयर करता हूँ तो हमारे पेयर्स के मुकाबले हमारा थोड़ा मार्केट शेयर कम है, क्योंकि ओवरऑल पेयर्स में अगर 30-32% टायर 1 से और बड़े शहर से मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करता है तो हमारा 17-18% ही है। तो उसमें काफी गैप है। उस गैप को कम करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़े कैंपेन मतलब अगस्त से 15 अगस्त से लेकर के दिवाली तक करने वाले। मुझे लगता है उसके कारण भी काफी इम्प्रूवमेंट रहेगी। तो जैसे मैंने बताया, लाइटिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपका जो है चैनल पार्टनर के साथ आपका रिलेशन मायने रखता है। हमारे यहाँ किसी का क्रेडिट नोट अगर रिप्लेसमेंट का जाना है, विदिन 30 डेज सेटलमेंट हो जाता है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है जिसके कारण कंपनी के साथ जो है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल आउटलेट का जो है जुड़ाव बना रहता है, और वो आज तक हमने उसको मेंटेन करके रखा है। वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सूर्य रोशनी की रही है। ओके, थैंक यू। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Viraj Shah with Shah Investments. Please go ahead. Hi sir, good evening. Sir, how is the steel export book performing? Are we receiving any orders? स्टील में
Steel export. Export business is growing. In fact, we have added several new countries also. I will not name here publicly, but वेस्टर्न साइड में काफी नए कंट्री भी जुड़े हैं और करीब ये जो साइक्लोन की वजह से हमारा थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है 350-400 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है इन हैंड है, जो आने वाले अगले 2 महीने के अंदर में जाएगा. तो एक्सपोर्ट एक रेगुलर हमारा ट्रेड जैसा बिजनेस है. रेगुलरली हम लोग करीब 15,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल हमारा बिजनेस का जो साइज है उसमें 20% कंट्रीब्यूशन पिछले 3 महीने से रेगुलरली एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है. जो पिछले साल मुझे लगता है वो 15-16% था, वो बढ़ के करीब 20% ओवरऑल हमारा सेगमेंट का साइज बन गया है. सो इट इज ग्रोइंग और एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ही हाई है सूर्य के प्रति और इनफैक्ट बहुत सारे देशों में जो है हमारे डीलरशिप लेने के लिए जो है मतलब काफी हाई लेवल की कंपटीशन होती है ट्रेड. Understood. Thank you. Sir, for DFT plant, what kind of revenue are we expecting? So DFT क्योंकि अभी न्यूबॉर्न चाइल्ड है हमारे लिए और जैसे ओवरऑल EBITDA हमारा 4500 है, तो मैं अभी तो हम लोग करीब थोड़ा सा मटेरियल को प्लेस करने के लिए कर रहे हैं. तो इस साल हम लोग करीब 30,000 टन क्वांटिटी करेंगे और उसके अंदर में अभी हमारा करीब 2,000 के आसपास ही EBITDA कंट्रीब्यूट कर रहा है पर टन. तो आने वाले समय में इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और जो है मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू. इसके अंदर में क्या है, ये बड़े साइज के सेक्शन पाइप है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक करके बेचता तो नहीं है. बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट साइकिल कैसा मूवमेंट हो रहा है, उससे काफी कुछ निर्भर करता है और इसकी एक डिफरेंट मार्केट है, उसके हम लोग काम कर रहे हैं. ओके. और सर ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा? If we consider for all the plants Tarun Baldua here, then capacity utilization on an average is 72% for this quarter. Okay, no worries. Otherwise, on an average 78 to 80% capacity utilization हमारा मतलब है. Okay, understood. Thank you, sir. Thank you. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Chintan Patel with Advance Invest Managers. Please go ahead. सर, क्या आप मुझे रेवेन्यू ब्रेकअप इंडस्ट्री वाइज बता सकते हो? नहीं, मतलब हमारा सेगमेंट वाइज आपको वो चाहिए क्या? हाँ, सेगमेंट वाइज. नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल ट्रेड का हमारा कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं क्वार्टर की बात करूं करीब 55% है और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन करीब 18% है. कोल्ड रोलिंग का कंट्रीब्यूशन 12% है. एपीआई का कंट्रीब्यूशन 5% है. एक्चुअल यूजर जो मतलब B2G में जाता है या प्रोजेक्ट में जाता है उसका करीब जो है 5% है. इस तरह से ओवरऑल सेगमेंट का हमारा परसेंटेज है. सर, ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से बिजनेस आता है हमें, तो वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो करीब 12% है ऑयल एंड गैस सेगमेंट का. ओके. और सर ये अपना ये चीज आपको ये देखना पड़ेगा, वॉल्यूम में भले ही 12% का कंट्रीब्यूशन है, वैल्यू टर्म्स में वो करीब 20% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें रेवेन्यू भी और मार्जिन में भी. These are other industries driving the growth, sir? Which are? Other industry driving the growth except oil and gas? नहीं, so trade is a regular business, export is a major chunk, and the third one is API oil and gas sector. So mainly we are into trade, export and API business, and followed by cold rolling, which contribute about another 11-12%. So majorly these are the 4 segments. Okay. Thank you, sir. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question.
Once again, a reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. Once again, a reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, we have reached the end of question and answer session. I would now like to hand the conference over to Mr. Bharat Bhushan Singh. One question more. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Ltd. I sincerely once again thank you to our MD and the CEOs for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, contact our investor relation advisor. Thanks.